एक ना बहुत ही पॉपुलर कहावत है अबाउट ट्रुथ, सच, फैक्ट्स, रियलिटी। वो कहावत है कि सच कड़वा होता है। एंड आई नो यू वंडरिंग कि इस वीडियो में इस कहावत का सदुपयोग कैसे हो रहा है। हाउ इज दिस रेलेवेंट टू मेनसूत्रा और एज इज नोन दीस डेज श्वेताब गांगवर। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें पता है, तुम टाइटल देख के, थंबनेल देख के आए हो, लिखा है उसमें बड़ा बड़ा आई हेट श्वेताब गांगवर और आई हेट मेनसूत्रा। एंड टू बी फ्रैंक, जब मैंने पहली बार मेनसूत्रा का वीडियो देखा था अबाउट 5 years ago, इट वॉज दिस वीडियो कॉल्ड स्टॉप बीइंग अ लूजर। वो वीडियो मैंने 1 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5 बार देखा, एंड आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई से दिस, इट फेल्ट लाइक अ पर्सनल अटैक। ये बंदा YouTube पे बैठ के कोट पहन के ग्रीन स्क्रीन के सामने मूवी पोस्टर्स का गंदा सा बैकग्राउंड लगा के, एंड येट व्हाटएवर ही इज स्पीकिंग फेल्ट लाइक एन अटैक ऑन माय पर्सनालिटी. Every single argument, every single anecdote, every single word coming out of his mouth felt like it was being spoken directly to me, and I hated him for speaking the truth. I hated that Shwetabh Gangwar, even back then, was so good at what he was doing. That मैं जो उस टाइम पर नया नया कॉलेज में आया था, 19 साल का लड़का, daunted by a new world, could affect my headspace in such a manner. And now, 5 years later, when Shwetabh Gangwar is considered to be one of the best and most sensible minds on Indian YouTube, I've realized कि सच कड़वा तो होता है, पर जरूरी भी होता है. So welcome to a new episode of About That YouTuber. आज हम डिस्कस करेंगे about one of my favorite YouTube channels, not just because his channel Shwetabh Gangwar, but because of his older channel Mensutra. I'm going to analyze what makes his videos stand out, how his journeys and videos and opinions have impacted young minds in India, and what I think the future holds for Shwetabh Gangwar. This video is divided into 3 parts to properly analyze Shwetab's style, content and personality. पहले पार्ट में हम बात करेंगे about Shwetab's personality, his style and what makes him effective and why his audience loves him in the type of videos that he makes. Part 2 will take a look at the type of content that he makes, the topics that Mensutra and Shwetabh Gangwar usually cover in their videos, and part 3 finally will cover his evolution in the 5 years of YouTube he has done and what according to me is the future that Shwetabh Gangwar is aiming for. Timestamps on your screen right now and in the description if you want to skip ahead. Make sure you leave a comment on the video as YouTube algorithm likes it. Check out the other episodes in this series from the playlist, from the description and the cards, and welcome to this new episode in the About That YouTuber series on Shwetabh Gangwar aka Mensutra. Let's begin. अब देखो, अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है तो वीडियो की टाइटल और डिस्क्रिप्शन और थंबनेल में आई हेट मेनसूत्रा सिर्फ इसलिए लिखा है बिकॉज श्वेताब गांगवर हैज दैट पर्सनालिटी जो तुम्हारे मुंह पे, उसके मन में जो होगा, जो उसे सही लगता होगा, पूरे कंटेंट, पूरे बिलीव के साथ तुमको बोल देगा विदाउट हैविंग एनी डिसरिगार्ड और रिगार्ड्स फॉर योर फीलिंग्स, योर थॉट्स. द ट्रूथ, द राइट थिंग, व्हाट ही फील्स इन हिज माइंड इज द राइट थिंग, इज व्हाट ही ब्रिंग्स आउट टू योर फेस. And that actually is one of the biggest aspects why Shwetabh Gangwar, in my opinion, has been really successful on YouTube. And because अभी इस सेक्शन में हम श्वेताब की पर्सनालिटी पे फोकस कर रहे हैं, तो फॉर यू एज अ व्यूअर इट बिकम्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसी इंसान की पर्सनालिटी को तुम कैसे जज कर सकते हो. तो मेरे हिसाब से पर्सनालिटी जज करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, बहुत सिंपल बेसिक से, कि सामने वाला इंसान तुमसे क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है. इन दोनों एस्पेक्ट्स में आई थिंक श्वेताब पुट्स ऑन अ रियली गुड चेकलिस्ट बिकॉज व्हाट ही स्पीक्स इज वेरी टू द पॉइंट. यहाँ पे उसका जो कैरेक्टर एज अ डिबेटर दैट ही हैज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ पर्सन हु मेक्स लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. एक ना शब्द है जो इन माय ओपिनियन श्वेताब यूजेस अ लॉट, इज कॉल्ड तर्क, व्हिच बेसिकली इज हिंदी वर्ड फॉर आर्ग्यूमेंट्स और रीजनिंग. आर्ग्यूमेंट्स में बाद में आएंगे, बट पहले उसकी पर्सनालिटी पे हमें फोकस करना होता है. राइट फ्रॉम दी फर्स्ट वीडियो तो श्वेताब गांगवर हैज पोस्ट, उसकी पहली वीडियो से लेके आज तक की वीडियो में ही हैज डेवलप्ड अ पर्सोना इन द माइंड ऑफ द व्यूअर कि एक बंदा है जिसकी आवाज़ बहुत भारी है, जिसकी आवाज़ में करिश्मा है, जिसकी आवाज़ में चार्म है, जो सिर्फ तुम्हारे से कोट पैंट पहन के एकदम प्रोफेशनल तरीके में तुमसे बात करेगा. ही इज़ नॉट लाइक अदर यूट्यूबर्स और इवन मी इन दैट मैटर कि कुछ भी, कोई भी जंपर, कोई भी स्वेटर, कुछ भी बनाने के चक्कर में, कुछ भी वीडियो बनाने के चक्कर में, जस्ट टू गेट दी वर्ड्स आउट there. He does not compromise in the presentation of his words. He does not compromise in the presentation of his arguments. He does not compromise in the presentation of himself on a YouTube video. Regardless of what the quality of the video is, regardless कि वो उसको DSLR से शूट कर रहा है या फोन कैमरा से शूट कर रहा है, the audio quality and the way he speaks, the way he dresses, that are the 2 most important aspects of his personality that any viewer notices subconsciously. ये तुम्हारे दिमाग में ऐसे बस जाते हैं कि तुम्हें लगता है कि सामने वाला फिगर एक फिगर ऑफ अथॉरिटी के तरीके से तुमसे बात कर रहा है.
Which brings me to the second aspect. तो ये तो था कि वो कैसे बोल रहा है. The second and the more important aspect is कि ये क्या बोल रहा है. And right from the starting of the video मैंने तुम्हें बताया कि जब मैंने श्वेताब का first video देखा था, when I saw his first video, I was 19 years old, I was in college, I was going through a very life changing moment. एक छोटे शहर से निकल के दिल्ली में आना और वहाँ बड़ा होना, and all those things that he said in the video, I really literally felt like he was talking to me and me personally. and ऐसा ही हजारों लाखों लोग जो उसको सब्सक्राइब करे हुए हैं, जो श्वेताब की वीडियोस मेंसूत्रा पे या उसके बाकी चैनल पे देखते हैं, उनको भी एग्जैक्टली वही सेम फीलिंग आती है. बिकॉज द टॉपिक्स दैट ही कवर्स आर वेरी रेलेवेंट, द टॉपिक्स दैट ही स्पीक्स ऑन आर वेरी टू द पॉइंट, वेरी रेलेवेंट. ऐसी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही होती हैं, उस पर वो आर्ग्यूमेंट बताता है जो उसको सही लगते हैं. एंड आई थिंक यहाँ पे ना श्वेताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्लान जो काफ़ी रिस्क भरा था वो यहाँ पे सामने आता है. बिकॉज द पर्सनालिटी दैट ही हैज पुट अप ऑनलाइन ऑन हिज चैनल्स, दैट माइट और माइट नॉट इवन बी हिज रियल पर्सनालिटी व्हेन ही स्टार्टेड मेकिंग दोज वीडियोस. जो श्वेताब का पर्सनालिटी एज अ डिबेटर आज इतनी अच्छे से निखर के सामने आता है, दैट माइट नॉट बी द पर्सन दैट ही वॉज 5 years ago व्हेन ही स्टार्टेड यूट्यूब. बट बिकॉज उसकी पर्सनालिटी में वो बातें थी, उसकी आवाज़ में वो लहजा था, उसके बोलने के तरीके में, प्रेजेंटेशन में वो तरीका शुरुआत से था. आई थिंक दैट इज वॉज द रीजन दैट इज ऑडियंस कनेक्टेड टू हिम. एंड दैट इज वाई जो यहाँ पे बैकफायर हो सकता था. एक अगर आपको एक इंसान रैंडम बंदा आके यूट्यूब पे कोई बोले कि तू ये गलत कर रहा है, तू लूजर है, तू अपने आप को बढ़ा सकता है, अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, बट इन अ कॉन्डेसेंडिंग टोन, आई थिंक इट हैज अ पोटेंशियल टू बैकफायर. बट फॉर श्वेताब व्हाट वर्कड रियली वेल was because the audience started to trust him for his honesty, for his truth speaking capabilities, and I think that is the epitome of an incredible debater, जिसके सामने अगर आप अपनी आर्ग्यूमेंट से आप उसको हरा नहीं सकते हो ना, अगर आप उसकी आर्ग्यूमेंट्स से आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी. You will have to absolutely cede to the argument, to the superior tark, to the better argument, to the better reasoning. Which brings us to the next aspect of this video about Shwetabh Gangwar or Mensutra, which is the type of content in the videos and the topics that he covers on his 2 channels, which is feeded by the personality that he has. Let's check those out. आई थिंक श्वेताब ने अपनी किसी रीसेंट वीडियो में इस बारे में बात करी थी कि जो पहला वीडियो उसने अपने चैनल पर डाला था ना, वो था जसलीन कौर और सरजीत सिंह के केस के बारे में. एंड उस टॉपिक के बारे में जो ओपिनियन श्वेताब ने तब प्रेजेंट किया था, वो ओपिनियन कोई तैयार नहीं था बात करने को उस बारे में. विच बेसिकली सेट द सीन फॉर श्वेताब गांगवर's arrival on the YouTube platform. Now that video was posted on his Mensutra channel, which was his primary channel for a long while before he started the Shwetabh Gangwar channel. And it was because of this first video that श्वेताब के पास ना एक सेगवे था कि उसको कंटेंट किस टाइप का बनाना है. Shwetab's first channel, Mensutra, is quite literally that. It's a community that is built around his name of the channel. Shwetabh Gangwar के Mensutra channel के नाम के around एक community build करी उसने, which was about the betterment and improvement of men in India. एक youth oriented channel जिसमें Shwetabh will have to agree he used a very clickbait kind of a technique strategy. For example, most of his videos thumbnails, if you go out and see this, will talk about some problems, or they'll have statements like, do you want to be cool? Are you an escapist? Which basically challenge your inner beliefs. It's an incredibly perfect trick to get you into the video. And video में आने के बाद जैसा कि हमने देखा personality से, he will make you stick to the end. This trick seemed to be working really well for Shwetabh, but unfortunately इंडिया में इंटरनेट का इन्फ्लक्स होने के बाद एक रेवोल्यूशन जो आया, जिसके लिए हिंदी कंटेंट बनाना became a necessity for a lot of people. His Mensutra channel started going to a decline, but he did not lose hope then. Shwetabh Gangwar ने उसके बाद अपना कंटेंट एक और जगह स्विच किया. He's made his Hindi channel under his own name. And I think that is where his success actually catapulted, because under the Mensutra brand, while everyone knew him as Mensutra, nobody knew the person Shwetabh Gangwar behind it. And Shwetabh Gangwar नाम का चैनल खोलने के बाद he has received much more critical acclaim, he has received much more engagement on his videos, and especially his Hindi videos have proven to be more successful in more ways than one compared to his Mensutra channel. और अगर किसी के दिमाग में सवाल दौड़ रहा हो कि Mensutra ने वीडियोस अपलोड करना बंद क्यों करा, उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि इंग्लिश कंटेंट इन इंडिया वाज नॉट रीचिंग टू द अमाउंट ऑफ पीपल दैट ही वांटेड देम टू रीच. इसीलिए हिंदी कंटेंट जिसमें उसको और स्कोप और पोटेंशियल दिखा, ही स्विच टू अ हिंदी चैनल. बट द स्ट्रैटेजी वाज स्टिल द सेम. ही वाज स्टिल डूइंग द सेम टाइप ऑफ कंटेंट. ही वाज स्टिल डूइंग द सेम अप टू योर इन योर फेस काइंड ऑफ कंटेंट, जिसके बारे में लोग बात करने से डरते थे. ऐसी ओपिनियंस वो प्रेजेंट कर रहा था दुनिया के सामने जो प्रेजेंट करने से लोग डरते थे.
एंड वाइल आई अंडरस्टैंड कि एक बहुत ही ओवरव्यू काइंड ऑफ अ लुक था श्वेताब के कंटेंट पे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैविंग अ क्लिक बेट टाइटल जिसमें आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में पता चले या फिर ऐसे टॉपिक के बारे में बात पता चले जिसके बारे में आप बात करने से पब्लिकली डरते हो। अगर कोई बंदा अपने फुल आर्ग्यूमेंट्स रीजनिंग के साथ उस टॉपिक के बारे में आपसे बात करे, you will without a doubt be interested in it, and that is the kind of content that Shwetabh has been building for the past 4 or 5 years on YouTube. And quite frankly, I can't deep dive more into his content because it will require a lot of effort to break it down into a manner that is justifiable and deserving of the kind of effort that Shwetabh puts into constructing his arguments. Which makes me move on from the content section and the channel section to the third part of this video, which is where I think Shwetabh Gangwar का evolution पिछले 5 साल में and what according to me is the future that Shwetabh is aiming for. तो Mensutra पे वीडियो श्वेताब ने अपलोड करना बंद कर दिया। दी लास्ट वीडियो ऑन Mensutra was uploaded a long time ago and only future can tell whether he comes back on it or not. On his channel Shwetabh Gangwar, Shwetabh usually uploads a video a day, but recently what he has started to do is he has gotten into podcasting. Now for those of you who do not know, podcast is kind of a content, conversational type of content जहाँ पे सुनने वाले को काफ़ी कुछ सीखने से मिलता है, and it is a long form content which I think is an ideal type of platform for Shwetabh Gangwar. एंड अगर तुम लोगों को ऑलरेडी ये भी नहीं पता है, बट Shwetabh is also a published author of a book called the Rudest book ever, which I have not yet read, but I definitely intend to, and when I do, I'm going to talk about it as well. But here's the thing, Shwetabh Gangwar ने recently अपने चैनल पे पॉडकास्ट अपलोड करना शुरू करे हैं. He has started to get in touch with the top YouTubers in the country like Simon Says, Slay Point, Salil Jamdar, and उनके podcasts at the time of this video have gone live in some capacity on his channel Shwetabh Gangwar. Now podcasting I think is Shwetabh Gangwar का next big challenge on YouTube. Other than being an author, other than doing his regular videos, I think podcasting is what will take him to the next level in India. इंडिया में कोई भी अच्छा पॉडकास्ट नहीं है, अच्छा इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट जो लोगों को एक्चुअली सुनने में मजा आए. At this point, the only good competition that Shwetabh Gangwar has in this space is that of Ranveer Alabadia, who has been doing this for a considerable amount of time when compared to Shwetabh. But the difference between Ranveer Alabadia and Shwetabh Gangwar is very simple. If I were to pick to talk to a person between Ranveer Alabadia and Shwetabh Gangwar, as much as I love Ranveer Alabadia's content, as much as I love the thing he's doing for the community, as much as I love for the business that he's doing, I would still pick Shwetabh Gangwar to talk to me because Shwetabh Gangwar has that personality which makes me feel as if I'm listening to a person who knows what he's talking about, who is well read, who is well versed, who is well produced in his arguments that he is bringing to the table, and that is the kind of content that I would without a doubt talk. Now the future for Shwetabh Gangwar in the podcast space is very simple. It has more potential for him to get to a larger audience. जो उसकी current audience है, Shwetabh Gangwar has realized that it is evolving. जब उसके चैनल स्टार्ट हुए होंगे आज से 5 साल पहले, तो उसका मेजॉरिटी ऑडियंस वुड हैव बीन इन द डेमोग्राफिक बिटवीन द 13 to 18 एज ग्रुप. आज वो डेमोग्राफिक 23 से 25, 23 से 30 साल का हो गया है. एंड दिस इज एन आर्ग्यूमेंट दैट आई हैव मेड इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल कि अगर आपका ऑडियंस आपके साथ बहुत टाइम से है, तो आपके चैनल के साथ, आपके खुद के साथ वो ऑडियंस बड़ा हो रहा है. एंड Shwetabh Gangwar, while he always had mature content on his channel, while he always had intelligent content on his channel, the podcast form of content is I think the most important level up game that Shwetabh Gangwar can play in the YouTube space. Podcast generally लंबे होते हैं, 1 घंटे से ऊपर के होते हैं, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करे जाते हैं, उसमें काफ़ी सारा पर्सपेक्टिव सुनने वाले को देखने को मिलता है. एंड आई थिंक पॉडकास्ट कैन वर्क इन अ वे फॉर Shwetabh टू प्रोड्यूस गुड कॉन्टेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम. इसका रीजन ये है कि अगर आप एक आदमी के साथ एक 2 घंटे का पॉडकास्ट शूट करते हो, देन यू कैन ऑल्सो पुट आउट रेगुलर क्लिप्स ऑफ दोस कंटेंट विच आर गोइंग टू स्टे रेलेवेंट फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम. And over the course of the next 5 years of Shwetabh Gangwar's journey, I think he must always have in his mind to become a much more renowned speaker of YouTube, not generally on YouTube. He definitely will be planning to release another book. And I think 5 years down the line, when you look back on this video about Shwetabh Gangwar, I think all of these points about his personality, about his content, about the arguments that he presents will stay the same. And Shwetabh Gangwar will still be hated by me because he still will have the capacity to bring out such great arguments जिसके सामने मैं हार जाऊंगा अगर मेरे को उससे डिबेट करना पड़ा तो. And that's it for this video. Thank you so much for watching this video till the end, guys. This was a new episode in the About That YouTuber series that I come up with every Saturday. Make sure you check out the other episodes from the playlist in the description and the cards. Let me know which other YouTuber you want me to break down in the next video. And again, thank you so much for watching it till the end. I will see you in the next one. Goodbye.